Good morning, children. In last class, we have completed Padya Char Chidiya Ghar Ki Sair. We have completed the explanation of Padya Char Chidiya Ghar Ki Sair. Today, we will do the exercise and question answers. But before that, we will start. I will revise this poem. Okay. So, if you have textbook, open your textbook, page number 17. Open your textbook, children. Page number 17. Keep your finger there. Chidiyaghar ki sair. A visit to a zoo. Chidiyaghar means what? Zoo. And sair means what? Visit. A visit to a zoo. चिड़ियाघर में गाड़ी चलती चिड़ियाघर की सैर कराती. चिड़ियाघर में गाड़ी चलती चिड़ियाघर की सैर कराती. वह देखो बगुले राजा जी एक पैर पर खड़े हुए हैं और उधर बंदर मामा जी कैसे पेड़ पर चढ़े हुए हैं. Means in Chidiyaghar we can see the gadi, and in by that vehicle we can visit the Chidiyaghar. Means we can visit the zoo. वह देखो बगुले राजा जी. In zoo what we can see there? बगुला. बगुला means what? Crane. Okay. एक पैर पर खड़े हुए हैं. Means it is standing on one leg. एक पैर. पैर means what? Leg. एक पैर पर खड़े हुए हैं. और उधर बंदर मामा जी. और उधर बंदर मामा जी. बंदर means what? Monkey. We can see the monkey also in the zoo. कैसे पेड़ पर चढ़े हुए हैं? How they are climbing? How monkey is climbing on the tree. कैसे पेड़ पर चढ़े हुए हैं? देखो देखो हाथी आया हिरण के संग संग भालू आया. देखो देखो हाथी आया means we can see that elephant is coming, and हिरण के संग संग भालू आया. हिरण means what? Deer. हिरण के संग संग भालू आया means with deer bear also came. भालू also came. शेर जंगल का राजा देखो मोटा गैंडा भीमन भाया. शेर जंगल का राजा देखो means lion is the king of the forest. राजा means king and jungle means what? Forest. शेर जंगल का राजा देखो मोटा गैंडा भीमन भाया. मोटा गैंडा. गैंडा means what? Rhinoceros. And मोटा गैंडा. मोटा means what? Fat. मोटा गैंडा भीमन भाया means we like the rhinoceros also. मोर थिरकते नाच दिखाते हम सबका है मन बहलाते means here we can see in the zoo peacock also. They are dancing. They are roaming here and there and they are dancing. थिरकते नाच दिखाते. हम सबका है मन बहलाते means they are entertaining us. They are entertaining us. हम सबका है मन बहलाते. This is the meaning of this line. Okay, we can enjoy by seeing this dance of the peacock. रंग बिरंगी पक्षी देखो. रंग बिरंगे पक्षी देखो. रंग बिरंगे means what? Colorful. पक्षी birds. रंग बिरंगे पक्षी देखो मीठे मीठे गीत सुनाते. मीठे मीठे गीत सुनाते. What the birds are doing? Birds are singing the song. Birds are singing the song. Colorful birds, they are singing the song. रंग बिरंगे पक्षी देखो मीठे मीठे गीत सुनाते. और वह कंगारू देखो उसके पेट में है एक थैली means we can see the kangaroo in the zoo and in his stomach we can see the one bag. उसके पेट में है एक थैली. थैली means what? Bag. उसमें देखो उसका बच्चा. उसमें देखो उसका बच्चा means we can see the baby of kangaroo in its stomach. Okay, where that baby is sitting? In the bag of the stomach of that kangaroo. उसमें देखो उसका बच्चा कैसा है मस्ती से बैठा. कैसा है मस्ती से बैठा. How happily it is that baby is sitting in that bag of that kangaroo. उधर देखो उदबिलाव. उधर देखो उदबिलाव. We can see the beaver, right? Beaver where? In the zoo. उदबिलाव means what? Beaver. खेले जल में उछल उछल. What that beaver the group is doing? They are jumping. They are उछल उछल means उछलना means to jump. जल means what? Water. खेले जल में उछल उछल. They are playing in the water. They are jumping in the water.
नहीं थकता उनका दल. While jumping and while playing in the water, they are not getting tired. नहीं थकता. थकना means what? To get tired. नहीं थकता उनका दल. दल means what? Group. नहीं थकता उनका दल. चिड़ियाघर की सैर निराली means a visit to a zoo. It's very wonderful. बच्चों बजाओ मिलकर ताली. Children, you clap your hands by seeing all this in zoo. बच्चों बजाओ मिलकर ताली. So once again I'll read. You understood, no, this poem? So once again full I'll read. Keep your finger. चिड़ियाघर में गाड़ी चलती, चिड़ियाघर की सैर कराती. वह देखो बगुले राजा जी एक पैर पर खड़े हुए हैं, और उधर बंदर मामा जी कैसे पेड़ पर चढ़े हुए हैं. देखो देखो हाथी आया, हिरण के संग संग भालू आया. शेर जंगल का राजा देखो, मोटा गैंडा भी मन भाया. मोर थिरकते नाच दिखाते, हम सबका है मन बहलाते. रंग बिरंगे पक्षी देखो, मीठे मीठे गीत सुनाते. और वह कंगारू देखो, उसके पेट में है एक थैली. उसमें देखो उसका बच्चा कैसा है मस्ती से बैठा. उधर देखो बिलाव खेले जल में उछल उछल. नहीं थकता उनका दल. चिड़ियाघर की सैर निराली. बच्चों बजाओ मिलकर ताली. बच्चों बजाओ मिलकर ताली. So here this completes our poem. You have to read, keep your finger and read the poem. Okay, difficult words you have to repeat and again you have to read. So now we'll start with the meanings. I have written all the meanings which you have to write in the textbook. But this meanings from textbook I'll read. Keep your finger, page number 18. शब्द ज्ञान वर्ड पावर. चिड़ियाघर, चिड़ियाघर प्राणी उद्यान अ जू. बगुला एक पक्षी अ क्रेन. जंगल वन अ फॉरेस्ट. मन हृदय हार्ट. गीत राग अ सॉन्ग. थैली बड़ी जेब अ पाउच. मस्ती मौज पैशन. सैर भ्रमण विजिट. पैर पांव अ फुट. मोटा भारी फैट. नाच नृत्य डांस. पेट उदर belly. बच्चा शिशु infant. An infant. निराली अनोखी wonderful. Don't only listen, children, you have to read with me. Keep your finger and read with me so that you can read, okay, these words properly. So again I am repeating, keep your finger. चिड़ियाघर प्राणी उद्यान अ जू. बगुला एक पक्षी अ क्रेन. जंगल वन अ फॉरेस्ट. मन हृदय हार्ट. गीत राग अ सॉन्ग. थैली बड़ी जेब अ पाउच. मस्ती मौज पैशन. सैर भ्रमण विजिट. पैर पांव अ फुट. मोटा भारी फैट. नाच नृत्य डांस. पेट उदर बेली. बच्चा शिशु एन इन्फेंट. निराली अनोखी वंडरफुल. So this completes our meanings also. Now page number 19. We'll start with the exercise. Page number 19. First main is पढ़िए और लिखिए. First main is पढ़िए और लिखिए means you have to write that words only in the textbook. I will write once on the board. You have to write that same word in the textbook. You have to read that word and write again in the textbook. First word is, in first main, first word is चिड़ियाघर. How to write? च छोटी की मात्रा, ड से छोटी की मात्रा, डाउन डॉट चिड़िया एंड घर. चिड़ियाघर. Okay, next is कंगारू. कंगारू. चंद्र बिंदु अंक गा एंड र को बड़ी उ की मात्रा. र को बड़ी उ की मात्रा. कंगारू. ओके. थर्ड वन
गीत, very easy. For ग बड़ी की मात्रा and त. Here कंगारू, क चंद्र बिंदु, ग को आ की मात्रा and र को बड़ी ऊ की मात्रा. Understood? Now fourth one is बगुला. बगुला, ब for ग छोटी ऊ की मात्रा and ला, बगुला. Next हिरण, ह को छोटी ई की मात्रा ही, र न, हिरण. Okay. Next sixth one is मस्ती. म then स half, त को बड़ी की मात्रा, मस्ती. सेवेंथ वन बंदर, ब अनुस्वार र, बंदर. एट वन भालू, भा भ को आ की मात्रा देन लू, भालू. नाइन्थ वन निराली. 9 words are there. निराली. ओके. फॉर न छोटी की मात्रा देन र आ की मात्रा एंड फॉर ल बड़ी की मात्रा, निराली. चिड़ियाघर, कंगारू, गीत, बगुला, हिरण, मस्ती, बंदर, भालू and निराली. Only 9 words are there. Same repeat you have to write. पढ़िए और लिखिए, read and write the following words. Okay. Have you completed, children? Write neatly. This textbook exercise also you have to complete. So now we'll move to the second main. इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Okay. Second main is इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए. In that first question, बगुला कितने पैरों पर खड़ा था? Very easy answer, children. You have to answer. बगुला कितने पैरों पर खड़ा था? Yes, बगुला एक पैर पर खड़ा था. First answer, बगुला एक पैर बगुला एक पैर. Pero it is given no in question, but here one no. That's why you have to write only pair. See the difference. You don't write here pero by seeing in the question. Only you have to write here pair. आपको पैर ही लिखना है. वहाँ क्वेश्चन में पैरो दिया गया है, but in answer you have to write pair. Okay. एक पैर पर खड़ा था. कितने पैर पर खड़ा था? एक पैर पर खड़ा था. बगुला एक पैर पर खड़ा था. सेकंड क्वेश्चन, बंदर कहाँ बैठा था? बंदर कहाँ बैठा था? बंदर पेड़ पर बैठा था. वेरी इजी आंसर. वन लाइन ओनली आंसर. बंदर कहाँ बैठा था? बंदर पेड़ पर बैठा था. So while writing tha, you have to circle. Otherwise, it will look like here. See here. Up you have to circle, children. Otherwise, it will look like here. Properly circle. Complete the circle there. बंदर पेड़ पर बैठा था. Third question is, हिरण के संग कौन आया? हिरण के संग कौन आया? Yes. हिरण के संग कौन आया? हिरण के संग संग भालू आया. हिरण के संग संग भालू आया. हिरण के साथ कौन आता है? हिरण के संग भालू आया.
हिरण के संग भालू, यार बड़ी की मात्रा इन भालू आया, हिरण के संग भालू आया. See here, yeah, here don't circle. In third you have to circle. Last answer. किस जानवर के पेट में थैली थी? किस जानवर के पेट में थैली थी? यस, कौन से पशु के पेट में थैली है? यस, कंगारू. सो यू हैव टू राइट कंगारू. कंगारू जानवर के पेट में, कंगारू जानवर के पेट में थैली थी. कंगारू जानवर के पेट में थैली थी. कंगारू जानवर के पेट में थैली थी. So this completes our 4 answers. Complete in textbook, children. बगुला कितने पैरों पर खड़ा था? बगुला एक पैर पर खड़ा था. बंदर कहाँ बैठा था? बंदर पेड़ पर बैठा था. हिरण के संग कौन आया? हिरण के संग भालू आया. हिरण के संग भालू आया. लास्ट क्वेश्चन, किस जानवर के पेट में थैली थी? कंगारू जानवर के पेट में थैली थी. While doing I की मात्रा, don't do like this. It's wrong. Both matras should come one side only. So many you are writing like this. Now don't do like flower here. So both matras should come one side. So write it properly. Okay, have you completed? Now we'll move to the third main. थर्ड मेन इज चित्र देखकर उनके नाम लिखिए. look at each picture and write its name under it. So below this picture line is given, you have to write there the name of the picture. What is given in the first picture? Yes, bagula. What is there? Bagula. First one, crane. No, that's why bagula. Next you have to tell the answer. Next picture is of, yes, monkey. So bandar. Third one, go like this, children. Okay. Next, third one is more, peacock. Fourth one is bear. No, that's why bhalu. Fourth one is bhalu. Fifth one is very easy. Yes, hathi. Okay, next, sixth one is lion. Means in Hindi, yes, sher. What you have to write? Sher. Okay, so complete this. First one is bagula, second one is bandar, third one is more, fourth one is bhalu, fifth one is hathi, and sixth one is sher. Okay, have you completed? Page number now 20. I'll write here. Take out page number 20. In that, which exercise is now? Fourth exercise. चित्र देखकर विलोम शब्द लिखिए. चित्र देखकर विलोम शब्द लिखिए. Look at the picture, write the word and its opposite in the space given below.
means two pictures are given. Like that, three are there, and you have to write that picture by seeing the name. By seeing the picture, you have to write the name, and we'll get the opposite words. Okay. So first one is what, children? Which is the picture given? It's first one. Yes. Huh? First picture is which? Seth. Okay, you can see the rich person, no, there. So that's why Seth. And this side, yes, you can see the knocker or beggar. You can see servant or beggar. It is looking like. So you can write there knocker, or you can write there bhikhari. In this picture, in this lesson, we in third lesson we have seen no Seth or bhikhari. So here you can write here bhikhari. Next, second one is picture of, yes, here you have to write bhikhari only. Here Malik and Naukar. This side you have to write Malik. It is looking like owner, master, no? That's why it is Malik. And you can see here Naukar, like it is servant, no picture. That's why Naukar. Here you have to write Seth and bhikhari. Here Malik and Naukar. You can see you are getting the opposite words here. Next, now first one, yes, sunrise and sunset. So you can write Suryasta and Suryasta and Suryodaya and Suryasta, or you can write Subaha or Sham. Okay, you can see sunrise here and sunset, no? So Subaha Sham you can write, or Suryodaya Suryasta. You can write Suryasta. Suryodaya means what? Sunrise, and Suryasta means sunset. Okay, so here you can write Subaha also, and Suryodaya also you can write. Suryodaya means what? Suryodaya, sunrise. And here you can write Sham also, or you can write here Suryasta also. Suryasta means sunset. Okay, Suryasta. So both you can write. You will get the opposite words here. Suryodaya, Suryasta, Subaha, Sham. So complete this main also. Fourth main. Fourth main. First one is Seth. This side bhikhari, Malik, Naukar, Subaha, Sham, Suryodaya, Suryasta. Okay. Now we'll move to the fifth main. Fifth main is उपसर्ग जोड़कर लिखिए, उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए. Join the prefix and write the word in the space given below. Very easy main. I have already explained what is उपसर्ग. जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर किसी नए शब्द को बनाते हैं तथा उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं. उपसर्ग मीन्स व्हाट? प्रीफिक्स. मीन्स वी आर जॉइनिंग सम वर्ड बिफोर दैट वर्ड and that will change the original word, or it can give the more here value for that word. So that word is विशेषण लाते हैं, इसीलिए वह शब्द को उपसर्ग कहते हैं. Means prefix. उपसर्ग means what? Prefix. Join the prefix and write the word in the space given below. In that first one already it is given there. So we'll start with the second one. Okay. First one it is given a plus janma, ajanma. Now second one is a plus maran. Yes, very easy children. A plus maran. What is the answer? Yes, amaran. A plus maran. Here, which word is upsarg? A. Which word is upsarg? A. A plus maran. Amaran. Third one. A plus jivan. A plus jivan. What is the answer? Ajivan. Next, fourth one is A plus gaman. A plus gaman. What is the answer? Agaman. Agaman.
Agman. Fifth one. Pra plus shasan. Pra plus shasan. Prashasan. What is the answer? Prashasan. Prashasan. Pra plus shasan. Sixth one. It is prashasan. It is given in the textbook. Okay. Now next one is pra plus vachan. Pra plus vachan. Answer is pravachan. Answer is pravachan. So it changes the meaning only of the original word. This which word? Upsarga pra. Okay. Next, seventh one is para plus gram. Para plus gram. Not prara. Para. Para plus gram. Para plus gram. What is the answer? Parakram. Now next, eighth one is, have you completed, children? I'll rub now. Okay, if you are still writing, pause the video and write. Now eighth one is para plus gaman. Para plus gaman. What is the answer? Paragaman. Next, ninth one is para plus jay. Parajay. Para plus jay. Parajay. Next, 10th one is para plus bhoot. Para plus bhoot. Yes, parabhoot. Para plus bhoot. Parabhoot. Next, 11th one is pra plus bal. Pra plus bal. Prabal. What is the answer? Prabal. Last one. Pra plus char. Pra plus char. What is the answer? Prachar. Pra plus char. Prachar. Okay, complete this. This completes our fourth poem. An exercise also. So, once again I repeat. See here, A plus maran, amaran. A plus jeevan, ajeevan. A plus gaman, agaman. Pra plus sasan, prasasan. Next, pra plus vachan, pravachan. Para plus kram, parakram. Para plus gaman, paragaman. Para plus jay, parajay. Para plus bhoot, parabhoot. Pra plus bal, prabal. Pra plus char, prachar. So complete this in textbook exercise. You have to complete the textbook exercise also and write your notes also. Okay, so complete your classwork and textbook. And in next class, I'll start with the fifth lesson, Batsuratum. So up to till that, you have to complete this full exercise in the textbook. Okay, children? Thank you.